अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। He bestows the jewels of true knowledge upon us, enlightens not only my heart but of everyone, gives us the supportive teachings at every step. We belong to Him and He belongs to us. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Emma Ben, welcome. Om Shanti. Om Shanti. आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। भाई और बहनों, आपने पहचान तो लिया होगा, अभी गीत सुना और देखा भी, तो जो गा रहा था वो कौन था? वो हमारी एनी बहन ही तो थे। तो देखो कितनी कलाएं हैं ना। तो आज हम भी खुश नसीब है ना कि हम खुश नसीब कितने कि एनी बहन का आज अनुभव सुनने जा रहे हैं। और हेमा बहन जो है एज यूजुअल कहेंगे ना, वो ट्रांसलेशन की सेवा हमें प्रदान करेंगी। तो आप दोनों अनुभूति से है, तो भले हेमा बहन। Om Shanti, Sister Annie. Om Shanti. Good morning. Nice to see you. Yeah, Sister it's nice to see everyone. हाँ, ये हमारी एनी बहन है। इनको is it 20 years in ज्ञान or 15 now, Annie? How many years? 15. हाँ, 15. Okay. इनको 15 साल ज्ञान में हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि मिनेश भाई कहाँ से ये गीत ढूंढ के लाए, मैंने भी कभी नहीं देखा था। और उसको दिखाई देते मैं हैरान हो गई। कहती है जब मैं ज्ञान में आई तब मैंने गाया था, वो खुद ही हैरान हो गई। पता नहीं कहाँ से मिनेश भाई चीजें लेके आता है, हमको समझ में नहीं आता है। अब मेरा पार्टी ऐसा है, क्या करूं, कहाँ से चीजें मेरे पास निकलती है। मैं समझता हूँ बहन ने भी गाने के बाद ये वीडियो देखा नहीं होगा इतने सालों में। Sister Annie, they're saying you probably have not seen that video since the time you sang the song, right? No, I haven't seen it. It was a kind of shocking. Yeah, I saw a picture, but I've never seen the whole thing. No, it's kind of painful, but you just, there's a shyness that I have. And so sometimes it just, but you have to just let it go and just appreciate the experience. It was a wonderful experience for me. कहती हैं कि मैंने सोचा नहीं था, मैंने सिर्फ पिक्चर में देखा था और मैं बहुत शाय व्यक्ति हूँ, लेकिन कई बार वो चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये बहन है ना, मैं सच्ची बोलूं, एकदम रतन बहन है। 15 साल से ज्ञान में है, मेरे से यहाँ 2.5 घंटे की दूरी पर ड्राइविंग में रहती है और यहाँ अनुभूति आती है। 2.5 घंटे की ड्राइव है, उसके लिए आएगी तो 1-2 रात रहेंगी, वर्कशॉप कराती हैं, सेमिनार कराती हैं, बहुत कुछ कराती हैं और एकदम नम्र है। वैसे तो वो स्कूल सिस्टम में थी, तो वो बच्चों को पढ़ाती थी, तो लिविंग वैल्यूज का प्रोजेक्ट या कुछ है तो वो भी वो कर लेती है। लेकिन जैसे कि कई बार मैं उसकी धारणा को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे एकदम कुमारी कैसे होती है, हर चीज पूछ के करेगी, हर चीज पूछेगी छोटी मोटी। उस दिन वो किसी को कहा उसको जाना था सौगात लेने की बात, तो मुझे कहती है कि मैं ये $100 स्पेंड कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने कहा वाह रे, धारणा कितनी ऊंची है। उसका पति के साथ कहा घूमने को जाना होगा तो भी मुझे पूछेगी। मैंने कहा भाई तेरा पति है, जाना। ज्ञान में चलता नहीं उसका घर वाला, लेकिन बहुत अच्छा है। जब भी यहाँ आएगा ना तो बड़े प्यार से मिलेगा और वो उससे बहुत खुश है, क्योंकि उसने जो अपने जीवन में जो खोज थी ना, उसने वो यहाँ आकर के पाया है। तो अभी तो हम उनके ही शब्दों से सुनेंगे, फिर अंत में अगर कुछ ऐसा है तो मैं बताऊंगी। So we're gonna start now, Sister Annie. Yeah, I will be your translator. So you say sentence and stop so I can translate for them, okay? Where do you want me to start? Start with your name and your experience. What, like the other day I said, where were you before Gyan? How you came to Gyan? What touched you? What made you Baba's child? And you're a kind of person that's mind, body, wealth,
BMW total surrender. You are that kind of a John. So what inspires you to surrender your mind, body, and your complete wealth in Baba's yajna? You know, which even some people think to do, but you have done that. So how do you do that? Share your name. Talk about Jim a little bit. How Jim feels about you being in knowledge. Okay, so my name is Annie, and I won't spend much time on my early life, but I was raised as a Roman Catholic, and went through with my early years with a very strong, good family. My father was a very strong presence and actually had a lot of powerful values. क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथोलिक में वहां मेरा जन्म हुआ और उसी प्रकार से मैं बड़ी हुई हूँ। और मेरा जो फादर थे तो कुछ बातों में बहुत स्ट्रिक्ट थे, मान्यता बहुत उसकी ऊंची थी कुछ बातों की। So I was raised with pretty much old-fashioned values, and in a family that was very, very family-oriented. And परिवार में पारिवारिक सुख बहुत था और पुराने दिनों से जो वैल्यूज के आधार से जो लोग जीवन जीते थे उस अनुसार मेरा बचपन रहा। And so I really liked family life. To be honest, I really didn't like school when I was little very much because I was very, very shy. मुझे परिवार से बहुत सुख मिला और मैं बचपन से ही, मुझे वैसे देखा जाए तो मैं शाय थी और वैसे मुझे स्कूल में जाना भी पसंद नहीं था। My mother was very Catholic, and I remember when I was a young teen, she sent me not too far away, but to a beautiful retreat place that the Catholic nuns ran, and I remember being very impressed with that experience. मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे कैथोलिक की कोई रिट्रीट सेंटर थी, तो मेरे टीनेज में थी तो मुझे वहां भेजा गया और जब मैं वहां गई तो मैं बहुत प्रभावित होकर के वापस आई। And I remember coming home and telling my father, who was a very strong presence in the family, that, and he was not Catholic, he was Episcopalian. So he was Christian, but not Catholic. And I told him that I thought I wanted to be a nun. And he looked at me and he said, no, you don't. You want to get married and have children. So I didn't say anything. मैं जब वापस घर पे आई तो जबकि मैं बहुत प्रभावित थी तो मैंने अपने पिता को बोला कि मैं समझती हूँ मैं नन बनना चाहती हूँ। तो क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग पंथ होते हैं ना, तो एपिस्कोपलियन उसके फादर थे, मदर अलग प्रकार की क्रिश्चियन थी। तो मेरे पिता ने मुझे बोला कि तुमको नन बनना है, तुमको तो शादी करके बच्चे पैदा करने हैं ना। तो मेरे फादर ने ऐसे मुझसे बात किया, उसका जो स्वभाव जो था वो थोड़ा कड़क था। So through college and that whole period, it was a very tumultuous time in the United States. There was the Vietnam War. There were a lot of changes going on. And for me, it was, I missed the simplicity during those years of, we used to spend the summertime every summer out in a country setting. It was like a village, and it was very plain, and I missed that so much. And you need to go slow, dear. You can't, you need to stop. So go slower. तो उस समय वियतनाम वॉर चल रहा था, तो काफी कुछ ऐसी बातें उस समय चल रही थी. I went as far as Vietnam War, and then okay, it was a very confusing time in the United States, where there was the whole hippie movement. There was a lot of cultural changes going on. Plus, the president was assassinated. It was just a lot of changes.
बहुत उस समय बहुत सारी परिस्थितियां थी। तो हिप्पी का ईयर था, प्रेसिडेंट Yeah. चेंज हुआ था, तो अमेरिका में बहुत सारी ऊपर नीचे बातें हो रही थी उस वक्त पे। And what I was saying was, I think there's something in my memory track, but I missed the simple life that we used to lead as a family when I was a child, living in the countryside. We lived like in a village, and I missed that. हम एक गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे। हमारा Yeah. जीवन बहुत सादा और सिंपल था। तो मुझे वो प्रकार की ये जो जीवन थी ना, वो जब मैं बड़ी हुई, सिटी में गई, तो वो मैं मिस कर रही थी उस प्रकार की जीवन शैली। So after college, I pretty much decided I would not get married. I didn't really want to get married. But कॉलेज yeah, कॉलेज then के बाद मैंने बिल्कुल निर्णय कर लिया था कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। and the interesting thing is, Jim, who I've been married to for about 44, 45 years, he didn't want to get married either. So I didn't know that, but he didn't. But we met, and I guess it was part of the destiny, you know, we got married. And I remember when I brought him, this is how, you know, old fashioned my family was. I was 26, 27, and I brought him to meet my father. He came to the house, and I remember before we went in the house, he told me, he said, you know, I've read the Bhagavad Gita. And I was like really surprised. He said he had read a lot. Stop, Annie, stop. So मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। और जो मेरे पति जिम है, तो उसको भी शादी नहीं करनी थी। एक मैं आपको 40-45 साल पहले की बात कर रही थी। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उसको भी शादी नहीं करनी थी। तो पता नहीं कैसे हो गया, तो हम दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। तो फिर मैं उनको अपने घर, अपने माता पिता को मिलने के लिए ले आ रही थी। तो हम दरवाजे पे थे, शायद मेरी आयु 26-27 साल की होगी। तो उस वक्त उन्होंने बोला मुझे कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है। So it was like something I almost, you know, I remembered inside of myself when he said, I've read the Bhagavad Gita. So I had studied some Indian scripture in college. I was interested in, you know, Paramahansa Yogananda. I did some Hatha yoga, but I never got so into, you know, so there was some of that there. मैंने भी यूनिवर्सिटी में थी, तो मैंने भी अध्ययन किया था, परमहंस का योगा किया था, कुछ बातें मैंने की थी, लेकिन इतना समझ नहीं पाई थी, जो लेकिन पढ़ा अवश्य था मैंने। So Jim, I would say, is an agnostic. He is not a religious person, but he, so anyway, I was the one, then when we had 2 children, I felt I had to give them some values-based religious upbringing. So I went back to a fairly liberal Catholic church, Franciscan group, and जैसे हमने शादी किया, वैसे मेरे पति कुछ खास भगवान को मानने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब शादी किया, 2 बच्चे हुए, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी तो कुछ आध्यात्मिकता होनी चाहिए, कुछ रिलीजन होना चाहिए। तो मैं फिर कैथोलिज्म में चली गई। वहाँ जो चर्च था, वहीं पे जाना मेरा शुरू हुआ। But then there was a turning point for me. They were, our daughter was in college, our son was in high school, and I was diagnosed with a type of cancer, breast cancer. And this changed my whole life. It was a blessing. बच्चे छोटे थे, पढ़ रहे थे, एक कॉलेज में था और एक यूनिवर्सिटी में था। जब पढ़ रहे थे, तो मेरे को कुछ तबीयत के टेस्ट पेपर आए थे और मेरे को डायग्नोस किया ब्रेस्ट कैंसर। तब से मेरी जीवन
का परिवर्तन होना शुरू हुआ। I realized I wasn't afraid to die, and but I realized that it was time. Something went off in me that said, you have to start doing what you want to do. You have to follow your own spiritual journey. Your kids are old enough, figure it फिर out. मेरे अंदर से आया कि वैसे तो मैं मौत से डरती नहीं हूँ, लेकिन अंदर जो आत्मा की प्यास है, आध्यात्मिकता की जो प्यास है, तो मुझे अंदर से ये लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे तो अब बड़े हो गए, लेकिन तुम्हारी जो प्यास है उसको पूरी करने के लिए अभी समय आ चुका है। So there was just a litany of, so I ended up becoming involved with you could call it a New Thought church. It's it's more of a spiritually based center, but it was still Christian based. There are popular churches in the US like Unity. That's a New Thought church. Unity Church, any of these. And basically what the core is that you are what you think, and the power of the thoughts. The thought has power and it can change your life. तो फिर मैं ढूंढती थी, तो अमेरिका में उस समय कुछ नए प्रकार के आध्यात्मिक चर्चेस थे। तो उसमें वो मान्यता थी कि आप जैसा विचार करेंगे वैसे व्यक्ति हो, वैसे आप हो। कुछ प्रकार के इस प्रकार के कुछ आध्यात्मिक चर्चेस थी, तो वहां जैसे कि मैंने जाना शुरू कर दिया। So I got very involved. I became what they called a prayer practitioner, where I did prayer with people, and I did a lot of singing in that church or that facility. उसी चर्च के अंदर मैं उन्हों के साथ गीत भी गाती थी और औरों के साथ गाती थी और वो भी गाते थे। तो उस अनुसार फिर सब मुझे पहचानने लगे क्योंकि मैं इस प्रकार से मदद करती थी। An interesting thing was, within that ministry of people, there was a group that were followers of Paramahansa Yogananda and self-realization. And so I got involved in that. उसी ग्रुप के अंदर ही सेल्फ रियलाइजेशन जो परमहंस का है, उनके भी लोग कुछ उसी चर्च में ही थे, तो फिर मेरी भी दोस्ती उन लोगों के साथ हो गई। So the long and short of that, I won't go into all the expansion, is that I felt very drawn, like coming back to closer to my roots, and I got involved with the meditation practice that Ananda, this group called Ananda, or self-realization, Paramahansa Yogananda, what they taught for meditation. So I started doing that meditation. क्योंकि मैं उनके संबंध में आई तो मैं बहुत प्रभावित हो गई, तो फिर उनके प्रभाव के आधार से मुझे मेडिटेशन और ध्यान में भी इंटरेस्ट आने लगा, तो सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर के साथ, तो फिर मैं भी वो करने लगी उन लोगों के साथ। I remember very clearly that these two practitioners came down from Ananda, which is, part of Paramahansa Yogananda's group. It was like an offshoot of self-realization. And they came, I remember they're coming to this group that I belonged to that was still this New Thought group. And I remember they said they were going to come for several meetings and they were going to teach the Gita, the Bhagavad Gita. उनमें से भी जो दो खास व्यक्ति थे, जो परमहंस योगा वाले, तो उसमें से दो व्यक्ति खास जिस चर्च में वहां जाती थी, तो वहां खास आए और उन्होंने ये बात बताई कि हम आएंगे यहीं पे और आपको जो गीता का ज्ञान है वो आपको हम सुनाएंगे। उन्होंने ये बात बताई। And so I went to the first meeting they had, and when I was sitting there, I don't know why, but I thought to myself, this isn't the Gita. This isn't true, and I'm not going to come to any more of the classes. So I didn't.
जो मैं पहली दफा गई, तो जब उन्होंने बोला गीता का ज्ञान, तो मैंने सुना कि मुझे लगा कि पता नहीं क्यों कि यह कोई गीता का ज्ञान नहीं है। मेरे अंदरों से ऐसे आया, फिर मैं दोबारा गई नहीं वो सुनने के लिए। And I remember feeling that I was really searching for the truth and that I wanted to know what the true Gita was. And you know, there was that driving feeling of wanting to find God. So, मैं खोज में थी, क्योंकि जब सुना तो मुझे लगा कि ये सत्य नहीं है। मैं अंदर की मेरी जो प्यास थी, तो मैं ढूंढने लगी कि सत्य चीज क्या है, मुझे सत्य जानना है। actually, I'm just wondering what to say next. I also, at the same time as a school teacher, I was having this intense kind of, well, I started writing more and more to God, and I always addressed God as dearest one. It was just that, my dearest one, and so I would write to God a lot. And मैंने लिखना भी शुरू किया, और क्योंकि मैं भगवान की खोज में थी और मैं स्कूल टीचर थी, तो मैं रोज भगवान से बात करती थी, मैं लिखती थी डियरेस्ट गॉड, रोज लिखती थी कुछ न कुछ। And I carved out this little meditation area in my bedroom, and very small. And then I started feeling, this is odd, I don't know how to describe it, but like there was this Native American, I couldn't tell if it was a man or a woman that was pulling me, that was there, that was pulling me. And later on, much later after I came into Gyan, I felt that it was Dadi Janki. That I thought it was Native American, but it was, you know, perhaps it was Dottie who was pulling, because I couldn't figure it out. मेरे बेडरूम में मैंने क्या किया कि एक कोने पे मैं वहां ध्यान के लिए बैठती थी, और ध्यान के लिए बैठती थी, मुझे ऐसा लगता था कोई नेटिव अमेरिकन है जो मुझे खींचता है। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये शक्ल पुरुष की है, स्त्री की है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि लगता है कि जैसे ये दादी जानकी की शक्ल थी। At the same time, so I had all these different things going on. I started wearing orange all the time. And then orange, I ended up wearing white. So I'm trying to remember the sequence here, but what happened as well at that time when I was at this other center and, you know, decided I didn't want to learn the Bhagavad Gita the way that these souls were sharing it, it sounds crazy, but I went through this kind of finishing off of a Christian devotion, and it was towards kind of like the Madonna, like the feminine energy, but more in the saints in the Christian realm. And I remember I had people, women, that would come and we would meditate together. And I had one of these, I had pictures of these images of these more Christian-based or Western-based saints. Annie, for the 10th time, stop. Stop. Okay, well, you can just tell them I kind of went through finishing off a kind of a Christian feminine. अपनी जो भी क्रिश्चियन जो बिलीफ थी, तो वो लग रहा था कि अभी उसको वो पूरा कर रही थी, और ये जो गीता थी, जो गीता का ज्ञान सुना रहे थे, वो भी उसकी बुद्धि में नहीं जा रहा था। तो ये उसकी मानसिक स्थिति थी, क्योंकि बहुत जगह वो ढूंढ रही थी, सत्यता की खोज में थी। There was a young woman that came to my house, and I thought, well, I'll let her know about Paramahansa Yogananda. And, you know. औरत थी जो मेरे घर पे आई, और मैंने सोचा कि जबकि ये मेरे घर में आई है, तो परमहंस का ये जो योग जो मैं सीखती है, उसके बारे में मैं ये बातें बताना चाहती हूँ। तो मेरे मन में इन्हें सोचा कि इसको मैं बताऊंगी।
So she came over and she looked at me and she said, well, I have a living guru. And you know, that's that's more powerful. And I said, oh, really? Who's your living guru? तो उसने And मुझे कहा मेरे Amaji. मेरे पास तो जीता जागता गुरु है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो मैं सोचने लगी कि इसके पास कौन सा जीता जागता गुरु है, और वो है अम्मा जी। Yeah. So I said, oh, really? I've never heard of her. And she said, oh, yeah, she's the hugging saint from Kerala. And she has a North American ashram. Actually, it's not too far from Anubhuti, but yeah, in the Bay Area. And she said she's going to be here next weekend. So, you know, in this search, तो I उसने looked कहा कि मेरा signed जो up. गुरु है तो यहाँ आने वाला है, इस देश के अंदर भारत से आएगा, और कैलिफोर्निया के नजदीक उनका आश्रम है, तो वहीं पे वो सबको बाकी पहनती है, तो मैं वहां जाने वाली हूँ। So actually, this search got more intense once I ended up there for a maximum of 2 years, maximum. But I started going, and I think I played out my my devotional energies. But what happened to me there that was very powerful was, it's what Baba says in the Murli all the time. I had this मैं 2 साल तक overwhelming, वहां जाती रही, और जो भी मैं समझती थी कि मुझे जो भी भक्ति करनी थी, जो बाकी रहा था, तो मैं समझती हूँ कि वहां मैंने पूरा किया, और वहां मेरा एक अनोखा अनुभव रहा। so many things happened there that kind of started opening up my third eye, but one of them was having this overwhelming desire to be purified. वैसे तो बहुत सारे अनुभव किए, लेकिन एक जो मेरा अनुभव था, मुझे था कि मुझे अंदर से गहरी फीलिंग थी कि मुझे पवित्र बनना है, वो मेरे जैन से निकल रहा था। And so when sometime the year that I started going to see Amma, the family came, they had us do RT as a family, and I got more involved, and I had several pujas done for the family down in southern India, and I forget what I was going to say though. Oh yes, Jim went. मैं परिवार को लेकर के आरती वहाँ परिवार के साथ जाती थी, परिवार सहित हम आरती के लिए जाते थे, और मैं भारत में भी जो उनका आश्रम था, तो कई बार पूजा आरती सब कुछ वहाँ कराया मैंने। Yeah, and so Jim and our daughter went to her ashram in Kerala. It was when that terrible tsunami happened. I don't know if it was 2005, something like that. They went with a group of Indians from Michigan and we were in California, in Michigan, that were going to study and document how the people responded to the horrors of this tsunami. 2005 में केरला में जैसे सुनामी हुई, तो मिशिगन से कुछ लोग और मेरा पति और बच्ची जो मेरी एक है, तो उन सब वहां गए, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही वो स्टडी करने के लिए वो गए थे। So this was my idea. I wanted them to go. I thought I could as well, but teaching, I couldn't go that year because we started school early. I don't know. So they went. And मैं स्कूल टीचर हूँ, तो टीचर की जॉब के वजह से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, और वो लोग मेरे बिना वहां भारत गए। So Jim I asked him to bring back this very special harmonium from Kerala that, and I can't remember the name, but it's a very famous brand in India. And it's quite a large
large harmonium, and he did. He brought it. केरला से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वे मेरे लिए हारमोनियम लेके आए, तो वे ये विशेष और बहुत बड़ा और बहुत सुंदर मैंने मांगा था, तो वो मेरे लिए लेके आया. So what happened was at the ashram here in the Bay Area, I started playing and singing, and I didn't know I could play, but I could play this harmonium, and I didn't even know how to play, but I could play by ear. And then I would, and one of the most important songs that they would sing would be Om Namah Shivaya. And हारमोनियम जो बे एरिया में जो उनका आश्रम है, तो वहां से मैं ये बजाती थी और मैं गीत गाती थी. मुझे आता नहीं था, पता नहीं कैसे आता था, पता नहीं कैसे मैं गीत गाती थी, और विशेष ये ओम नमो शिवाय वाला तो मैं खास गाती थी. And so someone got sick or something, or they had to leave this group, and they wanted me to help lead the Sacramento Amma group with the satsang. They wanted me to lead. So there were, several of us. There was a woman that played the tablas. There were, I can't remember everyone else, but there were several. And so it really astounded me that I could play this and I could sing, because, it's kind of tricky to know how to play the keys. And anyway, so that was very interesting. And then it just, everything kind of got more intense. And then मैं बजाती भी थी और गाती भी थी. पता नहीं कैसे मैं दोनों इकट्ठा करती थी, और फिर पता नहीं कोई बीमार हो गया या क्या हो गया, तो जो सैक्रामेंटो में जो उनका आश्रम था, तो वो चाहते थे कि मैं वहां जाकर के ये कार्य वहां संभालूं. At the same time, I had changed my meditation, this room. Well, not changed it completely, but I had lots of devotional pictures in there. I had Paramahansa Yogananda, but I also had Krishna, and I had all kinds of pictures in my meditation room. And so I forgot what I was going to mention, but you get your Gyan journey yeah. now. You get your Gyan journey now. Okay, so what happened was I was kind of in this whole gopi thing, and I wanted to go to Vrindavan. I decided I did not want to go on one of these pilgrimages with this group, but I wanted to go to Vrindavan. So what happened was I turned on Amma's website in Kerala one night, and it was when I was looking to book this reservation to go to Vrindavan, and there was this amazing soul who, the second I saw her, I thought that soul is pure, because I was looking for this purity. मैं वृंदावन जाना चाहती थी, केरला जाना चाहती थी, मैं फ्लाइट बुक कर रही थी, तो मैं देख रही थी, तो जब मैं देख रही थी इस आश्रम के पिक्चर, तो मैंने एक विशेष आत्मा का ये पिक्चर देखा, तो मैं सोच में पड़ गई कि ओ ये कौन है. And it said Raj Yogini Dadi Rata Mohini, who was a teacher, and of course that interested me too. It said she was a teacher giving Amma the point of light, Shiva, point of light. And that just, it's crazy, but that just, something opened up, and I thought, oh my gosh, who is that? And who are the Brahma Kumaris? I'll never forget that moment. तो वो पिक्चर जब मैंने देखा, तो राज योगिनी दादी रतन मोहिनी जी का पिक्चर था, और वो अम्मा को पिक्चर दे रही थी पॉइंट ऑफ लाइट. तो वो मेरे दिल को छू गया, जो दादी थी, दादी की सूरत थी, वो पिक्चर दे रहे, जो मैं कभी नहीं भूल सकती थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे जरूर जाकर के मिलना है. So then the next weekend was some birthday party for Amma, and I was sitting in the car with someone, and I said, do you know the Brahma Kumaris? And she said, oh yeah, there's a center in Sacramento, which was the closest to me.
And she said, yeah, the sister Hansa, she comes to our church all the time, and she gives, you know, classes and speaks and so forth and so on. And I मैंने said, जब oh, okay. जब मैं गाड़ी में एक वीक के बाद कहाँ जा रही थी, तो मैंने पूछा कि आपको पता है ये ब्रह्म कुमारी कौन है? ये तो वो फ्रेंड ने मेरे ने बोला, ओ हाँ, यहाँ सैक्रामेंटो में भी है और हंसाबेन करके है जो यहाँ मेडिटेशन क्लासेस सिखाती है। ऐसे बोला तो मैं बहुत खुश हो गई फिर। So I remember calling the center, and I remember what she said. And I said, well, I'm doing this other meditation practice. Would it be okay to come there? And she said, oh, yes, this would be just like putting a little bit of chocolate in your milk and sweetening up your मैंने कहा कि मैं वैसे तो दूसरा प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आ सकती हूँ। तो कहती है कि नहीं हर्षा, नहीं, तुम दूसरा भी कर रही हो, ये भी जरूर आकर के करो, उसमें कोई हानि नहीं है। ऐसे लगेगा कि जैसे कि दूध के अंदर आपने थोड़ा चॉकलेट डाल दिया, तो आप जरूर आओ यहाँ ये ज्ञान उठाने के लिए। So I was told that the next time that I could come or be involved in a BK event was, it was like maybe, you know, the next weekend, I don't remember. And it was strangely, it was at a Catholic retreat center in Citrus Heights, in Sacramento. It was at a Catholic retreat center. उसने कहा कि वैसे भी ये जो हंसा बहन है हमारे चर्च में आती है हमको सिखाने के लिए। तो फिर वीक के बाद चर्च में हंसा बहन गई थी बाबा का परिचय देने के लिए। And you know, that was a defining moment for me too, because I'll never forget when I stepped in the room that they were using at that retreat center, and the energy was so powerful. I felt like I was being lifted beyond this world into a world of angels. That's all I can say. जब मैं वहां गई तो वहां का जो वातावरण था, तो वातावरण मुझे इतना अच्छा अनुभव कराया जैसे कि मुझे इस दुनिया से किसी और दुनिया में ले गए। सब बहुत ही अच्छा शक्तिशाली वायुमंडल का मैंने सबसे पहली बार जीवन में अनुभव किया। सैक्रामेंटो में ना? सैक्रामेंटो भी है ये ऑल्सो। Yeah. And so I know it sounds odd, but that was it for me. I just from that moment, my whole world became BK, and I remember the first time I sat in Baba's room, and I just sat there, and Baba said to me, my eyes reflect your purity and your peace. उसी घड़ी जैसे कि मैं बाबा की बन गई और पहली दफा जब मैं बाबा के कमरे में बैठी, तो जैसे बाबा ने मुझे कहा कि जैसे कि तुम्हारे नैन हैं जो मेरे नैन हैं, तुम्हारे द्वारा औरों को अनुभव होगा। बाबा जैसे कैसे कुछ मुझे संदेश दे रहे थे। You know, I remember one sister saying, you know, she was talking about how she was going to Madhavan, and I was like, when can I go? When can I go? But I think I had to wait about a year. I don't know. I think the beauty was I was able to take the entire family to Madhavan. I think it was in 2007, which was really, it was a really beautiful experience. We went in December, but it was like spring there that year. It was warm and it was beautiful. And मुझे मधुबन जाना था, तो मुझे कहा कि मुझे वेट करना है, तो मैं समझती हूँ ये उसमें भी कल्याण है। 2007 में हम पूरे परिवार सहित मधुबन गए थे, पति और 2 बच्चे सहित। वो मेरा सौभाग्य था
और मौसम भी उस समय बहुत अच्छी थी, स्प्रिंग की मौसम थी जब हम गए तब। Yeah. And of course, another interesting thing was that it took me, you know, I had to kind of negotiate my way out of that satsang situation. So I had to, you know, it didn't take very long, but I couldn't just completely leave them. But I remember at one point we were able to, I had told Sister Hansa actually in Sacramento, I said, you know, wouldn't it be nice if we could take Amma the picture of Shiv Baba here in the United States as well and present it to her here in North America. तो मैंने भी युक्ति से अपने आप को, जो सत्संग में जाती थी, तो धीरे धीरे युक्ति से अपने आप को न्यारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि एकदम न्यारे हो जाएंगे तो तकलीफ पहुंचेंगी उनको। तो मैंने धीरे से युक्ति से अपने को न्यारा किया। और एक बार मैंने हंसा दीदी से कहा कि कितनी अच्छी बात होगी कि जबकि अम्मा इस देश में आ रही है, तो हम क्यों न, जैसे इंडिया में जो पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा का चित्र दिया, तो हम भी यहाँ क्यों नहीं जा करके उसको ये पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा का चित्र दें। So eventually she agreed, and because I felt like Baba was, you know, supporting me in that idea, but I waited. And so we had a fairly good group of people that came, a lot of Westerners too, to present Amma with Shiv Baba's picture at the ashram in the Bay Area. And उनका आश्रम was nice. है अम्मा का, तो हम दोनों और उस समय काफी डबल विदेशी भी हमारे साथ थे जो बीकेस, तो हम सब इकट्ठा मिल करके गए और अम्मा को ये पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र देने के लिए सब इकट्ठे होकर इकट्ठे गए थे। And one other really special moment that I had forgotten about was it might have been the first time, I don't think it was, maybe the second or third time I went to Madhaban. I was able to meet with Dadi Ratan Mohini. I mean, I've met her several times, but it was the first time I got to meet her after I had seen her as that jewel that just pulled me in. And so I remember it was after Baba's meeting and just going and her just blessing me and giving me Toli. It was another one of those experiences that were just, it was like an angelic experience. You know, you can't really explain it in words, but that was a lovely, lovely experience. जैसे मेरी पहली मुलाकात ब्रह्मा कुमारी का रतन मोहिनी दादी जी के पिक्चर के थ्रू हुआ था। जब मैंने उसका फेस देखा, तो जब मैं मधुबन शायद दूसरी या तीसरी दफा गई, उस समय मुझे रतन मोहिनी दादी से पर्सनल मुलाकात करने का मौका मिला। तो जैसे एकदम बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली, जैसे कि एक फरिश्तेपन की अनुभूति का बड़ा विशेष अनुभव रहा जब मैं दादी से मिली उस वक्त, क्योंकि पहला मेरा ब्रह्मा कुमारी के साथ कनेक्शन रतन मोहिनी दादी के साथ से हुआ था। So that was how I finally got to Baba. I feel when I thought about it last night, I just felt, oh my gosh, I am the most fortunate person in the world because रात्रि को सोते समय सोच रही थी कि सच में सारे विश्व की आत्माओं से मैं कितना न भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे अपना बनाया। So really, there really isn't much more than that. It's just I've been very grateful to be able to spend probably the last 8 years at the retreat center. I retired in 2012 from teaching, and I really wanted to spend more time at the retreat center. So this has been a very special blessing for me. 2012 में मैं अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और मैं करीब 8 साल से
अनुभूति रिट्रीट सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि वहाँ बेहद सेवा होती है और आश्रम बड़ा है। तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि बाबा ने मुझे ये वक्त दिया है रिट्रीट सेंटर में बिताने के लिए। So what is it that keeps you going in this knowledge? What brings you total faith? Being everywhere and doing everything, different language, different background, different all above everything. So what brings that faith in you that this is God and this is Baba's Murli? Because I always make a comment in the class. Now I always say the best faces whilst reading the Murli is the mothers. They are the best faces. You can see them in a totally blissful stage, really appreciating the Murli. Best faces are the mothers, and you see the Western mothers, when we read the English Murli, the Western mothers, oh, their face light up, So tell them, what brings faith in you? That this is the Murli is the truth, word of God. I can't Explain. tell you, it's in my chit. It's that relationship with Baba. I think that, and just feeling like I've waited so long to find Baba, and I think it's, we have experiences, right? We and then it's, I can't tell you, it's just in there. It's in our, I must have lived a life with a lot of bhavna. I realized that I probably transferred a lot of my devotional energies over to Baba. I felt like I was just in love with Baba for the first 4 to 5 years of my, that's all I तो लगता था 4-5 साल बाबा के प्रति प्यार में खोई रहती हूँ, लेकिन बात ये नहीं है, लेकिन एक अनुभव की बात है। ये बात अच्छी लगी, वो बात अच्छी लगी, वो बात नहीं है, लेकिन अनुभव की बात है। और यहाँ आने से भी ये अनुभव होता है कि जिसके मैं पुरानी आत्मा थी, इसी कुल की आत्मा हूँ। ये मुझे जैसे एक फीलिंग आती है कि मैं यहीं की हूँ, इसलिए मुझे कोई नई बात नहीं लगती है। तो मुझे अंदर से लगता है कि जो मैंने खोया था वो मुझे मिल गया। तो मोर ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन बाबा से जो कनेक्शन है, जो अनुभूति है, वो अनुभूति की बात यहाँ है मेरे लिए। I said that it's not about knowledge, but it's what you experience here. Your connection with Baba, your experience. Yeah, that's everything. Yeah. So I think for me, I also needed to balance it out, and I've learned through time that, having that love and bhavna, but it also needs to be balanced with, sensibility and, just a lot of strength, a lot of determination, a lot of grounding as well. You can be a little bit in the clouds, but you have to have your feet on the ground. दृढ़ता भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, और अपने पांव धरती पर रखना चाहिए जब इस ज्ञान मार्ग में चलते हो। तो बहुत सारी ये सब बातें इसमें लागू होती हैं। सिर्फ एक ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा को याद किया, नहीं, बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती है इस ज्ञान के अंदर। Yeah, it's a steep journey. There's always something new to peel off. चढ़ाई बहुत ऊंची है और बहुत कुछ छोड़ना भी है ना, उखाड़ना भी होता है, स्वभाव संस्कार, बहुत सारी बात है इस ज्ञान के अंदर। And I have to say, I'm very grateful, really, to my Lokik family for supporting me in this journey, because it's an intense journey, and they've accepted my journey really completely. The only thing Jim says is just accept me for who I am and just let me be who I am. And I think really, परिवार को बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये इस प्रकार की जो मेरी जीवन है, तो उन्होंने मेरी जीवन जिस प्रकार की है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो जिम जो मेरे युगल है,
वो भी यही कहता है कि तू जो चाहती वो कर, मैं जो चाहता हूँ मुझे करने दो, अब बाकी सब ठीक है। तो दोनों की इस प्रकार का संबंध है, तू भी मुझे ना कहे, मैं भी तुझे नहीं कहूंगा, सीधी बात है। So I for said, him, it's all about I said, respect. I said You know, to just them, I said, yeah. Kim says, you do your thing, I do my thing, and everything is good. Yeah, that's a good deal. So, yeah. And so we have 2 grandchildren, and when they're here, it's nice. They can get that feeling of Baba's love, and that's really nice. उनको 2 ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, लड़का लड़की भी है, तो कभी कभी आकर के एनी के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, तो वो भी जैसे बाबा का ज्ञान है, बाबा का वाइब्रेशन वो ग्रैंड चिल्ड्रन को देती रहती है, तो कहते ये भी अच्छी फीलिंग है कि उनको इसी आयु में बाबा का कुछ न कुछ हम दें। When they're little, they can accept the fact that they're light, they're a little star, and you know, I've told them that for a long time, and hopefully something inside of them will know that they're eternal and that it's okay, they'll never die, their being will never die, and they're beautiful. छोटे छोटे आत्माएं हैं, बिंदु है, छोटे बच्चे बिंदु की बात तो स्वीकार करते हैं, वो तो समझते हैं, और जैसे बड़े होंगे तो मैं समझ तो ये भी समझ जाएंगे कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो मैं धीरे धीरे कुछ न कुछ उन बच्चों को सिखाती रहती हूँ। It's been a fantastic, incredible journey. I never imagined that I would ever have this fortune. And I have to say, dearest, dearest Baba, I am so deeply grateful, really, every moment of every day. बहुत सुंदर, बहुत विशेष, मैं जितना ना बाबा का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि बाबा ने बहुत श्रेष्ठ, बहुत विशेष, बहुत ऊंची जीवन दी है। So thank all of you too. Thank you so much. Thank you for this incredible family, this beautiful family. बाबा को भी शुक्रिया अदा Looking करती for. हूँ, आप सबको भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा ने कितना ना सुंदर परिवार दिया और आप हमको इस वक्त मिलाया है, सो दिल से बाबा का और आपका शुक्रिया अदा। So thank you, sister, for sharing, for your time. But one question, please let me know, did you find Baba or you Baba found you? Anyway, what do you think? I think Baba found me. I mean, it's kind of like we're working together. I'm looking for Baba, Baba's looking for me. And it's suddenly it all sinks in harmony. Something clicks because he's looking for his children and we're looking for him. And it's the drama, I guess, you know, the timing. But इकट्ठा है, ड्रामा भी कहे, टाइमिंग भी कहे, है ना? Yeah. उसने जवाब दिया है। Okay, so sister Annie, see, I have a surprise for you, and that is your teacher. Oh, Sister Hansa. Oh, hi, Sister Hansa. How are you? Sister Hansa, you know, you really created a lot of beautiful opportunities for myself, for our family, and really some of the deepest experiences I had were at the center there, you know, meeting Baba, knowing Baba, and her realizing, you know, that, oh, I just remember so many funny things that, you know, you're learning, but you don't understand. And then she's just, you know, nodding. Yes, it's okay. That's wonderful. Yeah. बहुत प्यार से, बहुत धीरज से हमको पाला है, बहुत सारी बातें हम समझते नहीं है, तो भी कहती है ठीक है, और धीरे धीरे प्यार से बहुत सारी बातें हमको समझाई है, सिखाई है।
विदेश में तो ऐसा है कि हम सभी साथ में मिलकर के सीखते हैं। हम सभी टीचर हैं, हम सभी स्टूडेंट हैं। तो कई बातें ऐसे भी लगती है कि जैसे एनी बेन ने भी हमें सिखाई है। So I'm sharing that in the foreign lands, we all are working together we all are teachers, we all are students, we all are friends. And so many things I learned from Annie Ben also. So you have become also very good instrument to teach so many good things, Annie Ben. And I always appreciate your real love for Baba. You are Gopika, Baba's Gopika. And it feels like from previous life, yeah. Oh, well, thank you. I'm so glad that you're here. Yeah, I was also surprised. We just finished the Hindi Murli and I received the phone call from sister Hemangini Ben, Manish Bhai's Laukik Yugal. And she said that, you know, Annie is here. I said, oh, I don't surprise. It doesn't surprise me. तो मैंने कहा तो बहुत खुशी की बात है. So thank you so much for including me. और it was just perfect time because I was going समय कहीं कुछ काम के लिए बाहर जा रही थी तो फोन आया तो मैंने कहा चलो बाबा को मिलाना होता है ना तो बाबा मिला देता है. लेकिन आप सब क्लास वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है. एनी बेन का जीवन जैसे हेमा बेन ने भी बताया बहुत आदर्श है और विदेश में रहकर इतनी भावना भक्ति रखना, इतनी त्याग तपस्या रखना, ये बहुत बड़ी चीज है. एनी की सबसे बड़ी विशेषता है वो उदार दिल बहुत है, विशाल दिल है और रहम दिल है. वो बाबा की दिल वाली बच्ची है. I am sharing that Annie Ben's speciality is you have a big heart, compassionate heart, generous heart, loving heart. You are Baba's child of the heart, not head. And dil wali bachchi, the one who is like a dil wala temple, Baba says. So you are like a soul of the heart. बिल्कुल. हेमा बेन ने शुरुआत में ये बात कही कि ये बाबा का रतन बच्चा है, रतन बच्ची है. Right, yeah. हेमा बेन ने शब्द यूज किया तो ये आपकी भी कितनी विशेषता है कि देखो आपने स्टूडेंट को भी आपका टीचर समझ के मतलब उस बात को पकड़ा और स्वीकार करना कि कोई चीज हमने भी उनसे सीखी. ये भी निर्माणता का विशेष आप में गुण है. तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप एकदम शॉर्ट नोटिस पे ही हमारे बुलावे पे आप हाजिर हो गए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू एनी बेन फॉर योर टाइम एंड फॉर द वंडरफुल शेयरिंग. और हेमा बेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूर जरूर सबसे ज्यादा. एनी बेन, Thank you so much. एनी बेन की बड़ी विशेषता है, मनीष भाई, एनी बेन की बड़ी विशेषता. हम जैसे वो तो सेंटर में फुल टाइम नहीं रहती है, लेकिन जब हम कुमारिया सेंटर में रहती थी दादी जान की आपको किसी को सेंटर में रहना है तो दादी पूछेंगी गुणग्राही वृत्ति है क्या, गुणग्राही वृत्ति है क्या. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट is a person picks up virtues from other people. That's number one criteria to live in the center. Correct. Not that you live in the center and you start picking at other people's defects and faults. They're like this, they're like this, they're like this. That doesn't work out. So yet Annie Ben doesn't live in the center, but she has that quality. Great. She always picks up virtues from everybody. Until today, I have never heard her saying anything negative about anybody. Great. Even if you poke her, she won't say. And whatever I do, whatever I say, she takes it always positively. Until this time, she has never shown me an attitude or mood of face. Whatever I've said, sometimes I may be very tired. I've got so many people standing in front of me. This one wants this one wants this, So I might have not given her answer properly, but she does never show an attitude. And that's the greatest virtue. That you understand the person and you don't react and you have a smile. And that honestly is a sign of a yogi soul. Okay. That shows your yoga stage. If your yoga stage is not there and you have an ego, then mood goes off. But I've never seen her having a mood off. Wow. So Annie Ben, how fortunate you are. Annie Ben, see how fortunate you are. There are 4 teachers together, Baap Dada, respected Lata Ben and Hema Ben. Okay, so 4 teachers are together with you today. How fortunate you are. So, please. Well, I'll take
see to sister, now you sing a song for us because Oh, no. you can sing in No. Madhuban Diamond Hall, with 25,000 people. So here just 25 there are. So see, you must. So which song you will sing? Anyway, hum khush naseeb kitne. Oh, Lord, you have to sing it with me. Sure, I will try. Anyway, used to sing whole song in Hindi. Yeah. We Oh, I play. can't remember the whole thing. I should have brought my little book down. Hum kushan se bakitane, Prabhu ka mila sahara. Hum kushan se bakitane. You have to sing it with me. Prabhu ka mila sahara. हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम कुशन से बकीतने, प्रभु का मिला सहारा. Now translation in your style. No, you do. You How translated that. fortunate we are. Yeah. That's We are the most fortunate to have Baba. And I feel so blessed. Thank you, sisters, so much. दादी जानकी जब यहाँ आए तो एनी बेन ने हिंदी में ये पूरा गीत गाया था दादी के स्वागत में. I said Annie Ben and Mary Ben sang the song when Daddy was here, right? Yeah, that's right.